Hello friends, welcome back to my channel Ankita and Kunjal. My name is Kunj Patel and I am 10 years old and I got this parcel from Link with Science, and first of all thank you Link with Science for this amazing kit, and now I am going to open it. Now we will see any guesses guys. What is inside the box? और मैं आपको अगर खरीदना हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद सकते हो। चलो अब इसे खोल के देखते हैं। Now let's open it. I need scissors. So thank you again for Link with Science, and this is I'm going to open it, but the packaging is very nice. तो अभी देखते हैं अंदर क्या क्या चीजें हैं। So behind me you can see the Link with Science banner, and now I'm going to open it. Wow. So I think this is the slime kit. If you have guessed right, then you have seen. And these are the instructions. So मैं आपको बताऊंगा बॉक्स में अंदर क्या क्या है, और ये इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में देख सकते हो, और बाकी तो मेरे को पता नहीं है क्या है। अभी मैं आपको रैंडमली बता रहा हूँ इसके अंदर क्या क्या है। और ये है स्मॉल कलरफुल थर्माकोल बॉल्स, और यहाँ पे 2 पैकेट है। यहाँ पे कलरफुल नहीं, वाइट कलर थर्माकोल बॉल्स है। इधर ये भी 2 पैकेट है। ये पता नहीं मेरे को क्या है। ये साइड से स्मॉल, वेरी स्मॉल थर्माकोल बॉल है, और ये भी पता नहीं मेरे को क्या है। यहाँ पे 5 ग्लिटर बॉटल्स। Oh my God! बहुत मजा आने वाला है। और ये है रबर बैंड्स, and these are the tins and these are the caps. अभी हम गिनते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 and 5 थोड़ी थोड़ी छोटी डब्बियाँ है। तो हम चलो देखते हैं कितने ग्लू की बोतल। साइड से ये है 5 ग्लू की बोतल। यहाँ पे वॉशेबल वाइट ग्लू है, तो हमको 2 वॉशेबल वाइट ग्लू मिले हैं। और ये है वॉशेबल क्लियर ग्लू, ये भी हमको 2 बॉटल्स मिले हैं। और ये है वॉशेबल पिंक ग्लू, वॉशेबल ब्लू ग्लू एंड वॉशेबल ग्रीन ग्लू। नाउ वी हैव these watercolors, glittery there are 2 glittery colors and 4 simple colors water. Is this magical snow powder? मम्मी मैं तुमको बता रहा था ना मेरे को ये चाहिए, ये तो मुझे फ्री में ऑनलाइन में ही मिल गया। अगर आपको भी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये क्या, ये मुझे नहीं पता, पर पिंक कलर का कुछ है। ये शायद से स्लाइम बनाने के लिए पाउडर में है। ये है नॉर्मल वाटर कलर्स, और यार ये है मेजरिंग बीकर, और ये शायद से बोरेक्स का होगा। ये है मेजरिंग स्पून, यू कैन मिक्स इट ऑल्सो। और ये ब्रश, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे पॉप इट भी कर सकता हूँ।
और अभी मैं बाद में खेलूँगा, पहले अभी मैं सब कुछ वापस से चीज़ें बताऊँगा। अभी मैं सब कुछ चीज़ें अरेंज कर दूँगा और आप देखना। अभी मैं सब कुछ गिन के दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं बॉटल से गिनूंगा क्योंकि मुझे बहुत सारी दिख रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो तो 14 बॉटल्स है जिनमें सारे ये थर्माकोल देख लेता हूँ। 2 थर्माकोल है प्लेन और 2 कलरिंग है और 2 पैकेट्स हाँ वाटर कलर है और ये 1 रबर बैंड्स और ये सारी चीज़ें 1 2 दिया है और ये 1 है, ये अकेला है। 2 3 4 5 बीकर्स दिए हैं, टीन्स। यहाँ पे तो पहले इंस्ट्रक्शन मैनुअल है और मैं देखूँगा, पहला ये एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लाइम ही है, स्लाइम का ही बनाने का, और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं मैं करूँगा। पर उससे भी पहले मैं एक चीज़ बता लेता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, वो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में फॉलोअर्स ही नहीं बढ़ते। और यहाँ पे जो भी आज स्लाइम किट मुझे आज पार्सल में मिला है वो मैं आपको डिटेल्स में वीडियो बनाऊँगा। तो आगे 3 वीडियोस डिटेल में ही आने वाले हैं। और इफ़ यू डोंट हैव सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। So here the first one is glitter slime. So I am going to make the glitter slime. So for that we required glue we need, white clear glue and white glue. And we need team, this spoon, 2 glitters and 1 liquid slime activator. This is the beaker, and now I am going to use 10 ml, 10 ml and 10 ml of all of this. So first of all, we need to pour some blue glue. Now we have to pour it 10 ml. Now I am going to pour some 10 ml of glue. So I have poured 10 ml. Now I am going to pour clear glue. Now I am going to pour white glue. So now I am going to add glitter. This much is enough. Now silver glitter. Now I am going to mix it.
Now we have to add the slime activator, and we have to add a slime activator slowly and mix it also. It will start activating. So look at this, the slime is very soft. Oh,